Hi, hello, and welcome to KNTV TV. You're watching Inside Indian Football, another episode 104. I think today 104 not out. इंटरेस्टिंग नॉट मच इंटरेस्टिंग वैसे तो इंडियन फुटबॉल में चलता रहता है, नई चीज़ें आती रहती हैं, बट ऑफ कोर्स वी आर ऑन द वर्ज ऑफ रिसीविंग द final squad for the India's World Cup qualifiers against Kuwait and Oman. Also, the confirmation came from former Arsenal legend or one of the greatest manager in the Premier League history, Wenger, coming to India, and I think I can uh, I can confirm that he is most likely to watch a C-match masterclass against Qatar in Bhubaneswar. So Arsene Wenger likely to travel to Bhubaneswar to watch India versus Qatar game. So we'll discuss about that. We'll discuss about that what they're planning with what they're planning with the academy accreditation. Also their new structure in the academy accreditation, FIFA feeder academies, what will be FIFA academy doing, what Wenger is supposed to do in India, what AFF is trying to achieve by bringing Wenger. Also there's a confirmation from AFF, they have signed another MOU with CAFA, CAFA, Central Asian Association of Football, Central Asian Football Association. And what happened to the previous MOU? Is it just new MOU signed because we got a new president, or that's the another thing I don't want to know, because MOU was already in place. So why they needed another MOU? So that's fine. So which means that we will see Indian teams, boys, girls, men's, women's, in the CAFA tournaments going ahead, depending on our own calendar and the schedule accordingly. Other than that, I think मेन स्क्वाड की अनाउंसमेंट अभी देखो, अपुया वाली कहानी का डिटेल आपको दूंगा अभी. डोंट सेलिब्रेट अर्ली, ट्विस्ट है उसके अंदर एक, अभी बताता हूँ ट्विस्ट थोड़ी देर में. तो लेट नहीं हुआ यार, आज तो टाइम से आ गया, थोड़ा सेटअप करने में टाइम लग गया. एंड वो ट्विस्ट के बारे में बात करेंगे. भाई क्या उड़ीसा वाले जेरी इस साल फॉरेन क्लब में ट्रेनिंग करने के लिए गया था? यार इस साल तो नहीं गया था जेरी माइथामा, आई थिंक, और चांगटे, इफ आई नॉट रिमेंबर, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दे वेंट बोथ टू द लिवरपूल व्हेन दे वर एट द डीएसके शिवाजन. तो वो तब गए थे. तो अभी मुझे इस साल का तो कोई आइडिया नहीं है. तो सब बातें करेंगे आप लोगों से, सारी चीज़ें बात करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दी पीपल सेंडिंग द विशेस. I celebrated my birthday last week, so thank you very much on that. So let's start. I think let's start with the bad news first. The bad news is Jeakson and Anwar Ali are ruled out for a very long term, minimum 2 months. Jeakson is going through a surgery. Anwar has a fracture. So I think, I don't know how match fit they will be by the time Asia Cup comes. So I think that's a big concern for India. If you talk about in overall scenario for the Asia Cup, which is in the month of Jan. So 2 months. Thank you very much for the wishes. So 2 months from now, I am told minimum required for both of them to start their rehab. So Jeakson will have a surgery soon. Anwar has a fracture, so he was on the crutches when he came out from the game, if you remember the last week episode, and then we did a story on both the players. So I think Anwar will recover quicker than Jeakson. That's what I feel. Jeakson might be out of the Asia Cup also, I think, considering the complicated surgery, post-surgery recovery processes are in India, because rehab in India still is not on par with the the world football or the best sports in overall, especially in football. In the rehab part, we still need to work upon. We don't have much any central rehab centers like BCCI have a NCA in Bangalore. AFF should have their own rehab centers, but clubs also, but clubs in generals, they don't have the rehab centers. They don't have these kind of setup, ideally, which the European clubs have, where the player do rehab on regular basis. So I think hopefully that Jeakson recover quicker. So I think only way, I think Anwar has a slight chance, a chance to be fit for the Asia Cup. So depending on how his fracture heals and everything, that will take some time. But I think अनवर के चांसेस मुझे लगते हैं कि वो एशिया कप में होगा. बट ऑफकोर्स ये सब तुक्का प्रिडिक्शन है, होने को कुछ भी नहीं हो सकता है, तो वो कहानी अलग है. तो एंड अपुया
28 मैन की स्क्वाड लिस्ट पहले बनाई जाती है, तो मैं आपको बता दूं ये स्क्वाड लिस्ट क्या होती है क्या नहीं, एंड वाई वी शुड नॉट भागव, थैंक यू, वाई वी शुड नॉट लुक इनटू इट टू मच. 28 जो स्क्वाड है, 28 मैन की स्क्वाड विच इज सिलेक्टेड, अनाउंस नॉट अनाउंस, सेलेक्टेड बाय ईगोस मैच, इज इन अ वे इज अ pool of players who start their paperwork and everything from the club side to go and travel away from India, which is Kuwait this time. So eventually, Ego's team match will announce his 23-man final squad, depending on next few matches, which is 5-6 days remaining. So that's one thing. Another thing, Apuia, since the incident in the Hero Intercontinental Cup, have been part of the Premier League squad like these in past also. He was there in the previously bigger squad list, but never made to the final squad. And I hope this time he does make it. Had a good Champions League campaign till now with Mumbai as an individual, not as a team. And I think overall, if you ask me, I still will wait for the confirmation to of him in the 23-man squad. I think that's where something we have to look into it. other than that, I think भाई कीप एन आई ऑन यश त्रिपाठी. भैया बिल्कुल रखेंगे यार, टेंशन नहीं है. अभी राजस्थान से ही आया हूँ मैं, 1 दिन के लिए गया हुआ था, तो बरुआ जी चेक करना पड़ेगा. अभी आई वाज ऑन अ फ्लाइट, सो आई हैव नॉट टॉक टू एनी वर्ड, सो आई डोंट नो इफ ही इज गोइंग टू ट्रेड ऑन सेल्टिक जूनियर ईस्ट लैंकशायर फुटबॉल लीग. It's really very random, so I don't know. I have to check on that, and so I think with Jeakson out for next 2-3 months, what are the options Ego's team match have other than Apuia if he wants to play? He have to play Suresh or Thapa together, where none of them are number 6 by nature. They are box to box number 8 midfielders. Other option is then he brings something like Glenn Martins or Rolvin Borges or Amarjeet Singh Khiam, who Punjab FC, who played in Asian Games, to do the number 6 role. But are they, other than Amarjeet, Glenn and these players, Rolvin, their times are over. As an international, their time is over. So I think मेरे हिसाब से मुझे क्या लगता है कि Apuia should be definitely there, irrespective of the Jeakson injury or not, because I personally feel that he is the India's one of the best number 6 currently, and best in ISL also if you compare with the foreigners, in that particular position. So he should be there, for sure. And and I think with him, Suresh can be a good midfielder combo alongside Sahel, of course, as a number 10, who is looking like a man with a with a mission. I saw his the chart heat map. For what a heat map for distance covered and everything. Sahel is finally turning from golden boy to a man now. As a footballer, he is, I think, looks like closest right now in terms of football ability to taking that baton from Sunil Chhetri to not into the goals, but to be the star man of the team. And he has everything in him. He has to work in his finishing side. That's I want to say. He can be a better finisher. Of course, he gets into the chances. He creates a lot. So I think that position for that number 10 is forcibly locked for the Indian team in my eyes. And I think Suresh, Apuia, Sahel is a good combination of a midfield against away game against Kuwait. And if I don't know what happened to Thapa's form and everything, how Ego's team match see that, because Thapa recently have been not parcel of the Ego's team match first plan. He always part of the squad, but not first plan. Considering Thapa's abilities and past history with the Indian team, good goal scorer also, I think Apuia, Thapa and Sahel is also not a bad combination of a midfield. And if you guys are given an option, who will be your first 3 midfielders for Indian team? So let's take on that comment. 28 member की list अभी तक आई नहीं है मेरे पास, so I just landed at 4:30 p.m. I was in Udaipur, so I have to check the list. And that's the thing. There are lots of development in terms of what's going on with the AFF academies, accreditation and everything. There will be now a light academy tier for the academy rating. Then there will be 1, 2, 3 star rating in that. Then there is a semi, and then there will be at the amateur level at academy is also given the accreditation by AFF. So there is no under 19 league happening this time around.
Under 17, I will just get here because air is getting in between. Yeah, let me just tell you all the youth leagues what I heard. You know, give me a second. Yeah, what AFF has sent to all the member of associations on the youth leagues, the calendar I heard the under 19 has been not given a spot in the AFF calendar. So there is under 13, under 15, under 17. I'm a bit confused with the structure, and let's talk all the details on that. मुझे थोड़ा confusing लग रहा है. I don't know ये कहाँ से क्या देख के ये कर रहे हैं. एक सेकंड आप मैं डॉक्यूमेंट प्रिंट निकाल लेता हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा दिखाना या बात करना. Yeah, so there is under 13 category league which will happen. It is 7 versus 7. Okay, so and that's fine. Under 13, 7 versus 7 is fine. But then under 15 will be 9 versus 9. Ideally, India under 15 play in the SAF Championship, they play 11 versus 11. So why we doing under 15 9 versus 9? So I want to know a technical side of it. I have tried to touch in with some technical directors at the Asian level. So what they think about the under 15 playing 9 versus 9. Then there will be under 17 league 11 versus 11. So AFF feels the Reliance Development League, which is under 21, भैया उन्होंने तो कर दिया तो हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है. अंडर 21 हम क्यों करें, क्योंकि रिलायंस कर रहा है अपना, तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है. So that's why there is no under 19, there is no under 21 league from AFF side. So AFF is going to play 3 youth leagues, under 13, with 7 versus 7, 9 versus 9 under 15, under 17 11 versus 11. ठीक है जी. उसके अलावा पिच साइज का चलो वो तो 9 11 versus 11 है. So 18 in 13, so their squad size is 13, under 13 will be 18 men's squad, under 15 will be 20 men's squad, under 17 will be 23 men's squad, under 13 will have a rolling subs, under 15 or under 17 will have 5 subs each. In terms of the duration of the match, under 13 will be 25 minutes, 2 halves, 50 minutes a game, under 15 will be a 30-minute a match, which is 60 minutes in total, and under 17 will be 40 minutes. I still don't understand the logic of playing 40 minutes a half at under 17 level. Why we are, just not playing the normal. Why we have to create headlines out of everything? The new structure for the league. Why we need a 40 minutes half at the under 17 level? And worldwide at under 17 level, all the players start playing 45 minutes a game, each. So my understanding of this, I still don't understand. And under 13 level, no offside. Under 15, under 17, there will be offside. So, and kick in the under 13 level, under 15, under 17 throw in will take place. And the coaches for the AFFC at under 14, AFF AFC B, and AFF AFC B minimum requirement for under 17 and 15. So that's the youth league in a nutshell for you guys. People keep on asking me youth league. That's the detail for the youth league you have. And just update the, क्योंकि मैं खुद ही इसको बहुत टाइम से ढूंढ रहा था. अपडेट करता है टाइटल भी. तो यूथ लीग की डिटेल्स आपके सामने. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. आई डोंट नो व्हाई वी नीड दिस. जापान इज अंडर 11 playing 7 for 25 minutes each. That's under 11. We are talking about under 14, and under 15 ideally. So under 13, we are talking about under 13. Sorry, so under 13 is fine. I have no problem with under 13 playing 7 versus 7. Under 15 should be an actual football game. Why it is a 9 versus 9, I still don't understand. And why we have 40 minutes half each for under 17. Why not 45? 5 मिनट बचा के हम क्या कर रहे हैं? तो ये सारी लीग्स आई थिंक अभी तक डेट अप्रॉक्सीमेटली जो इसमें डेट बोली गई हैं, अपकमिंग सीजन आई थिंक दिसंबर ऑनवर्ड्स ही स्टार्ट होगा. एंड नॉर्थ में जैसा पोल्यूशन बढ़ गया है तो दिसंबर में भी मुझे लगता नहीं कैसे बच्चों का खिलाओगे आप, जैसा पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है. तो last time we told that there is no comeback in ISL, but this week we had seen many comeback. His thoughts about it. Yeah, man, अच्छी बात है. I think that's a good thing.
because that's tell you the characters and everything. I think some good games are going in ISL. Some great rivalries also outside, and some fans violence which should not be there. Again, I will say clubs have to make sure away stands are protected. Away fans need to make sure they are in away stands. So I think this is a mandatory rule worldwide. If you're an away fan, you are in away stands. If you're an away fan, if you're in a home stand, you have to be cool and calm and listen all the abuses and watch the game. That's a worldwide trend. If you're a Manchester City fan and you are in a normal stand with a Manchester United game at their home, you can't showcase celebration of Manchester City scoring goals and everything. There will be abuses through. There will be fight broken in between the players. So I think that's what I feel about that. What's going on? Clubs and the fans have to understand away stand is for away fans, and away fans should not be out of the away stands. Because as a club, as a safety point of view, you can protect the away stand, but you can't protect all the stands in terms of fight breaking between the fans. And football always have been a sports where there's a hooligans, worldwide, and I think it's tough to maintain that. So that's the thing. This is not an old document. I recently only received it, so I don't think it's an old document. Let me check the date. Okay, that was, but what I'm told, December onwards, all 3 leagues are starting. So that's what I'm. The date of the document has the latest one. So that's have December onwards the league will start. With I think again no home and away. There will be multiple venues, but no home and away in these 20 man प्रोल अभी तक रिलीज नहीं हुआ है क्या? क्लब्स को बता दिया गया है, बट पब्लिकली आई थिंक वो दे माइट नॉट पुट इट, तो इवेंचुअली फाइनल स्क्वाड ही बताई जाएगी. उसके अलावा बार बार पूछा, स्पॉन्सरशिप का कोई अपडेट नहीं है. आइडियली अब अपडेट आना थोड़ा मुश्किल है अनटिलनेस नवंबर इंटरनेशनल ब्रेक में कुछ होता है, कोई डेवलपमेंट चेंजेस होते हैं. कुछ चेंजेस होते हुए दिख नहीं रहे हैं मुझको. आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग पॉजिटिव इन दैट रिगार्ड. The company which was trying to take the sponsorship by a cut deal or a discounted deal, it looks like also in some difficult times. So they also have backed off. They were very close in the last international break. So we have to wait. Let's see. So I think AFF maybe should look in. Maybe national team sponsor can be somebody else. I remember ONGC, Panasonic used to be Indian national team sponsor. Why we should have a one sponsor for everything? Why not sell each property as as the requirement? I am sure there will be brands in India who might not want to sponsor ISL, but might not want to sponsor I League, but might be interested sponsoring Indian football team. So I think maybe that's the way. That's the way to do it. Maybe look for a national team sponsorship separately, and then maybe I League, ISL or Youth League can be merged together. So let's see. What's the view on Praful Patel appointment? I don't know what he is doing at FIFA. I think that's the only thing I say. It's bad for overall thing. जियो कोई बना दो स्पॉन्सर नेशनल टीम का और ISL का. यार जियो तो ऑलरेडी पैसा दे रहे हैं ना, अपने जियो फुटबॉल में इनका आता है ब्रॉडकास्टिंग का. ब्रॉडकास्टर ही स्पॉन्सर हो तो वो सेंस बनता नहीं है. Ideally for a league, it should be a sponsor from outside the family network of Reliance. So, वो better रहेगा for the league's growth and everything. Let's see. Manjab Banda is making a post to fans to book tickets in the home stand again. That's wrong. That's wrong. And what happened with the Mohun Bagan fans at Jamshedpur is also wrong in terms of violence should not take place. But I think as a fan, and as I said, worldwide, it's happened. You can't go as an away fan in the home, in between the home fans. Football is an emotional sport. Football fans are emotional. They are hooligans also. So these fights will always break. Even it's Jamshedpur, Bangalore, Kolkata, Kerala, anywhere, any stadium in ISL. If you're an away fan and you are into the home stands, you are celebrating each and goals you scored by your away team, there will be a fight broken. ये कहीं ये global golden rule है football का. ये होता है, worldwide होता है. So that's the thing. Because I remember watching a Bundesliga game on the last match day. We were at I think Dortmund was playing second last match game week, and Dortmund versus Stuttgart was the game, and there were some Dortmund fans in our group, and we were between the home fans. We were still very
warned by the officials we have with us and the stewards in the stadiums. You are in between the home fans. Don't over celebrate the goals, okay, of the Dortmund if they score, because then it's you who have to take care of your own safety. So I think this they have to मेरे हिसाब से क्लब्स को करना चाहिए, बट फैंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. व्हाट हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ बुकिंग दोज टिकट्स इन द होम स्टैंड डज नॉट मेक सेंस. ठीक है, टाटा कंपनी से बात करनी चाहिए और वो लोग स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं इंडियन फुटबॉल को, आई थिंक दे सकते हैं. And banter, see that's what I'm saying, you know, if Mohun Bagan won it and their fans are celebrating in front of the Jamshedpur FC fans in a home stand, it's a tricky situation. And you know, I don't know, I'm not taking side of any club in that. I'm saying don't allow away fans in the home stands, as simple as that. But I think it's tough sometime for the safety or administrative point of view. एक आदमी अगर नॉर्मल टी शर्ट और जीन्स में आ रहा है विद नो क्लब जर्सीज, हाउ कैन से ही इज नॉट जमशेदपुर एफसी फैन और मोहन बगान फैंस, यू नो. सो वो एक थोड़ा मुश्किल है, बट आई थिंक फिगर आउट करना चाहिए. Kuwait versus India 10 PM IST would be vibes. Yeah, day late night games. We are in the studio shouting at 12 in the night will be also a vibe. The only teams who can fill up the stadium are Kerala Blaster, Mohun Bagan, Jamshedpur. Others can't attract their fans. Mumbai is far worse in this list. I think GFC fans came in a away stand. No, there is two fights. One at the away stand, one at the Mohun Bagan fans in the home stand. So the fight broke in multiple places. एनी टेलीकास्ट अपडेट अभी आई थिंक आ जाएगा, कुवैत और इंडिया का टेलीकास्ट भी, तो विल फिगर आउट एंड आई थिंक होगा टेलीकास्ट, डोंट वरी ऑन दैट. थॉट्स ऑन नामदारी एफसी एंड इंटरकाशी. एक मैच देखा था, एक नहीं देखा था. आई थिंक देखो आई लीग में ना बहुत मुश्किल है बताना कि अभी कौन सी टीम अच्छी है कौन सी बुरी है. वी हैव सीन राजस्थान यूनाइटेड डूइंग स्टार्टिंग वेरी वेल लास्ट सीजन, देन फ्लैटरिंग व्हाइल द सीजन प्रोग्रेस्ड. सो वी हैव टू सी दैट एंड आई थिंक ओवरऑल डिसेंट टिल नाउ व्हाट हैव यू सीन इन आई लीग. आई लीग इज मोर ऑफ अ people's league in terms of, you know, how we see fans very close in Real Kashmir game, in Deccan, you know, Srinidhi's Deccan games. Fans are very close to the actions. You know, fans can go and, you know, meet and greet players. So it's a more of a like a championship, like a League One, League Two league in England. You know, so I think it's good for the grassroots development if you know I League can build on that. Sports 18 नहीं करेगा टले, they have agreed on national matches. Yeah, I think Sports 18 नहीं करेगा because Reliance के पास ही rights है अवे गेम्स का. मतलब सिंपल फंडा बता देता हूँ आपको. आई थिंक कुछ साल पहले एक डील हुई थी बिटवीन रिलायंस एंड एएफसी, नॉट रिलायंस, मतलब एफएसडीएल एंड एएफसी. ऑल द एएफसी सेंट्रिक गेम इन इंडिया विच इज AFC Cup, AFC Champions League, or the World Cup qualifiers, or the AFC World Cup, AFC Asian Cup qualifiers, will be produced by RICE or FSDL for AFC feed worldwide. In return, you know, and I'm not sure how much capital is exchanged in the deal, how much FSDL is paying to AFC. In return, they will get all the India's team Asia away games telecast rights in India. You know, they have that. So that's arrangement is already there. Who is showing, कौन दिखा क्या दिखा वो देखना पड़ेगा. इस वेंगर कमिंग टू कोलकाता, अभी तो कंफर्मेशन उड़ीसा का है कि मुझे लगता है बस उड़ीसा डेफिनेटली जा रहे हैं, अभी बताया गया मॉर्निंग मुझे. तो कोलकाता का हैव टू वेट. डिजिटल स्टेडियम तो जियो पे ही होगा इंडिया का, हाँ जियो सिनेमा पे ही आएगा. एनी थॉट्स ऑन डाउनफॉल ऑफ इंडियन वुमेन्स टीम. तो ये एक बार मैं थोड़ा सा इस पर ना एक डिफरेंट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है. श्रीनिधि जी ने उठाया है, तो इफ हैव रेज द क्वेश्चन लेट मी गो थ्रू इट वंस. टू थिंग. सो Indian women's team deserve more support from us, fans, federation, everybody. ठीक है, there is no doubt over it. The system for women's football in India is not up to mark. There is no doubt over it. Third thing, fans. Some fans, I don't know how I term those fans, made एक हवा बनाई उन्होंने, एक एजेंडा बनाया that women's team is more closer to the World Cup than the men's team. And these fans were not aware of the reality of the Asian football in women's, leave men's aside. They created this hawa on social media, you know, and these are few fans. I can name them, ज़्यादा नहीं है, कि भैया women's team तो ज़्यादा close है वर्ल्ड कप के, उनको और सपोर्ट दो, मेंस फुटबॉल को कम करो, ये है वो है, ये चलता है. Then eventually I saw that getting into the minds of some of our players, women's level. That's one, you know, and another thing is always of the women's team selection process. The league is not there. How it is selecting? You know, I remember a couple of years back when Manipur players were not selected. Rocky was the coach, you know, and then 7-8 players were not selected. So selection process is still not cleared because there are not much
league football or tournament in women's going on in India. As a fan, we cannot say that this selection is justified, this is not justified. Women coach in terms of what foreign coach we have brought, Denerchi. In past 10 years, go from 2013, Indian women's team had decent results at the Asian level with an Indian coach. So I'm up for the women's team with a foreign coach, but if you see the record of Indian women's team under foreign coach is not up to the mark. So these are some basic problem, that you don't create these fake agendas that women's team is more closer to the World Cup because they rank around 50th in the world. The ranking also used many times against the men's team by some of these fans. So I think वो चीज़ है एंड आई थिंक मुझे वो चीज़ सही नहीं लगती है. कुणालदार शेम न्यूज़ मैंने ही दिया यार, वो कतार वाला मैच मैंने ही ट्वीट किया है, तो मैं बता भी दिया स्टार्टिंग में. Why AFF giving broadcast rights to Eurosport? Is AFF has a problem with Sony Sports? तुषार, बहुत अच्छा सवाल है तुषार भाई आपका. Sony was wanted to showcase I League, but Euro has been preferred by AFF in recent times, so I don't know. So let's see. 9 months के लिए out, is injured or he won't play till next year. किसकी बात चल रही है भाई? Is Neymar coming or visiting 6th November? I have to see Neymar. I don't know. Neymar देखना पड़ेगा. And I think women's team across Asia have grown while we have stringent unsanity. And ये मैं इसके लिए 60s में भी जाऊँगा. Same thing happened in the men's football. We were good in the Asia because there are not many teams who playing football. When others started playing football, Indian men's team started going down. Similar thing now at the Asian level. India was always in the tier 2 in the women's football in Asian level. Okay, but the gap between tier 1 and tier 2 is huge in women's football, very huge. So, and I think now India is on the bottom pyramid of the tier 2 also, because I can see the tier 2 teams coming and defeating India, Thailand, these kind of teams which India would have defeated in past. So I think again we have to go to basics. There should be a proper 6-month league for women's, not a tournament, not how the tournament took place in Ahmedabad last time at the heat, 2 p.m. making the players play, not the way the broadcasting rights were sold for the women's league. It was symbolic, the women's league last season, symbolic I will say. Overall, if you what we are hearing about overall the organization of the women's league, symbolic. तो उस बीच में आप अब आओ बोलो कि हम इसको देखेंगे कैसा हुआ क्या हुआ. I think so first of all we have to understand that where our football is. Women's team were the tier 2, now they're at the bottom of the tier 2 and they're on the verge of getting to tier 3. So that's like India men's team is like a tier 4 is among Nepal, Pakistan in the Asian football. So that's how the Asia for women's hierarchy is. So any update on national team jersey online availability? Devashish, online I don't know, but I heard that Reliance Retail is keeping them. I'm sure they will put it online very soon. Nearby tournaments in KAFA, where could we see India? I think there were youth tournaments, so we have to wait for the dates, calendar of the KAFA. So let's see. Why BFC? What is BFC missing? Do you think Simon Grayson is the right coach for a long team? See, very tough. Simon was on the verge of getting sacked. Many people raised question on his, SM as a coach. Players were positive about Simon Grayson when he came, in terms of what he was doing, the training and everything. But when you have a cloud over you always that you are on the verge of sack, might be again if you don't do well, and the 4-4-2 formation, I have doubt, I don't, because that pressure on him will be always there, and I think considering BFC is going through a major rebuild in recent time, you can see they're promoting some players from academy also, so I think it's a tough time for him, but I believe he came out last year from the tough time by taking tough decisions like benching, senior players. So I think he have to take a tough decision again to make sure he is making sure, making sure like doing well. Bhai sorry but our women's team literally play like a cowards. इनको पास देने में भी शर्म आती है जब देखो long ball. भाई clear corruption चल रहा है women's football में. That's what I'm saying. It's not perfect. You can't blame the players here. As I said, the women's league broadcast thing last year was symbolic overall. The camps and everything is not up to mark, and it's not only because of the players and the coach, or everybody have to take the responsibility of it, and I think that's not going up to plan. So this season Simon will get sacked.
Mark Dix, maybe he make another comeback. When will Igor Stimac arrive in India? That coach to tell. I think he will arrive very soon. I think it should not be. विद्यासागर को पहले सोचना चाहिए था केरला जाना है कि नहीं. आराम से अगर विद्यासागर की बात नहीं, बहुत सारे प्लेयरों को सोचना चाहिए था उनको कहाँ जाना है कि नहीं. So यार मैं ना एजेंट से बात कर रहा था, कुछ एजेंट से तो बातचीत करता रहा, तो मैं उनको वो बोल रहा था यार आप क्यों साइन करवाते हो प्लेयर्स को ऐसे क्लब से जहाँ उनका प्लेइंग टाइम नहीं होता. यू नो, दीज आर द गुड एजेंट्स, द सीनियर एजेंट्स ऑफ इंडियन फुटबॉल जो पिछले 10 साल से एक्टिव है बिजनेस में, नॉट द अपकमिंग जो नए नए एजेंट्स आते हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सीनियर्स. बिकॉज आई बिलीव दो सीनियर एजेंट्स अंडरस्टैंड द गेम, अंडरस्टैंड द मार्केट, दे हैव दे कैन गाइड दिस प्लेयर बेटर, आई पर्सनली बिलीव. तो यार कुछ एजेंट्स और सेइंग यार प्लेयर्स का ना खुद का भी होता है कि नहीं मुझे वहीं जाना है, आई वांट टू गो टू दैट क्लब, नहीं मुझे उतनी सैलरी चाहिए, और समटाइम वो सैलरी कोई और क्लब नहीं दे पाता है. यू नो, सो आई थिंक players have to be smart with what they're doing and what not. You know, recent time there are enough talents we have seen going waste, you know, with the one single transfer they do, and you know they think that they're ready for the move. That's why I like what Parthiv Gogoi has done at Northeast and what Northeast have done with Parthiv Gogoi. Extended him a long term, give him chance to develop without any pressure of the, you know, playing for the say Mohun Bagan or the Kerala Blasters or the big clubs. So I think it's a good. You should only move when there's assurance of a game time, you know. And I think ideally for young players, don't make your moves at 18, 19 from one ISL club to another big ISL club. Stay till you are 21, 22, you know, be the leader of that club and then leave, I think. And that should be the approach. No one is passing, no man marking, no basics, no football. Raj, I think it must have been women's football. I want to see podcast on YouTube channel with any current national team players. Tushar will bring that very soon, I think. Are you satisfied with I-League broadcast gameplay quality, its promotion so far? Promotion, no. I-League broadcast, I think decent quality in terms of streaming I have seen. So I don't know how is in the TV. Streaming is decent. Quality, I think always interesting because new names come through. So still have to watch all teams, very honest. नहीं देखा है तो बता रहा हूँ, जितना देखा तो बता रहा हूँ. Bhai, as I remember at the MAU in Saudi Arabia, we were told we have participation in all Europe tournaments, but nothing happened. What is the guarantee that the Kafil succeed? Very true. And Saudi का मैंने एक और चीज़ सुना है, so I don't know how true is that or not, but वो जब मेरे पे true होगा तो बताऊंगा. भाई ऐप is done and dusted, Australia live है, अप्रूवल के लिए गई है एप्पल और एंड्रॉइड के पास. So कल कुछ दिनों में आपको देखने को प्ले आपके निहरी नज़दीकी प्ले स्टोर्स में मिल जाएगी या एप्पल ऐप स्टोर में मिल जाएगी. सोनी क्यों लिया आई लीग को? सोनी लिया ही नहीं आई लीग को ना, लेना चाह रहे थे बट मिला नहीं उनको. ब्रो, विच आई लीग क्लब हैज़ अ चांस टू विन योर प्रेडिक्शन? I think, see, prediction is very tough. Last year, you know, I really thought some team were doing a little better, Sinidhi Deccan, Gokulam. I still believe, you know, the Gokulam Kerala will suit I-League right now better than, you know, what we have. So hopefully वो चीज़ रहेगा. तो एक बार अभी देख लेते हैं. So मुझे ये लगता है बिकॉज एक मेच्योर्ड क्लब है, दे आर मेच्योर्ड क्लब है, वुमेन्स टीम, decent you know player size, decent talent pool from the Kerala also, decent fans also, I think, you know, which they can build upon, you know, and of course they have made a draw in the first game, you know, so वो चीज़ है. तो I think, but you know, Sinidhi Deccan infrastructure wise brilliant. पेपर पे पार्टनरशिप भी आ गई अब तो बेनिफिका की, होती रहती इंडियन फुटबॉल में ऐसी पार्टनरशिप्स. उस पार्टनरशिप से एक्चुअली कुछ निकल के आता नहीं है, वेरी ऑनेस्टली मैं बता दूँ आपको. द इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स जिससे कुछ सक्सेस निकली है, आई थिंक देयर वाज DSK एंड द लिवरपूल, वाज चांग टे एंड जेरी केम थ्रू इट, इंफ्रास्ट्रक्चर बना था. दैट्स वन आई विल से विच गॉट सम सक्सेस इन इंडियन फुटबॉल, you know, and I think Indian international partnerships are like that only. So I don't know, you know, and मुझे एक और चीज़ समझना है, you know, and अभी शिलोंग ने खेला नहीं है, so they will play this game week. Northern Sport has a good chance, but I think I still feel, because overall I will love to see Real Kashmir in ISL one day, but I still see they need to be ready for it and they are not ready yet. So you know, let's see how that goes. And Serenity is good, decent, but fans का थोड़ा पंगा है उनके साथ, और you know वो चीज़ है. रामरा भाई, एफएफ को रेफरी एजुकेशन के ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये VR लाइट लाना चाहिए. As we are seeing lot of complaint regarding VAR in Premier League, UK football are against VAR. VAR is not wrong in UK football. The referees who are using VAR are wrong in UK. So वो चीज़ है. तो
Bro, any promotion, I League to ISL, any new team to ISL next season, I League winner will go to ISL. I don't think any new franchisee have shown any interest to be, into the uh, ISL as a direct franchisee. I think both I League winners and runner-up should come to the ISL. No, I don't think. I wanted to touch upon good points, Srinidhi, you bring it. You brought this point. I wanted to bring Round Glass Punjab having a disappointing, disastrous performance till now. In the ISL. That's tell you the quality. There's a gap in terms of quality. Round Glass was the best team in the I League last year, but there's a gap. And of course, Round Glass has not built the team as I said in the start of the season. The team is still not up to the level of ISL, and what their effort also not up to the level of the ISL. And Punjab is yet to win the the ISL game since they came to ISL. So I don't think we are ready for two I League team coming to ISL. Talent pool का जो gap है बहुत ज़्यादा है. Long term contract holders है सारे Indian players. So I think इतनी जल्दी आप अगर team promote करते जाओगे ना तो free games, freebies मिलनी चालू हो जाएंगी ISL में. वो अच्छा नहीं है. Inter Kashi had a great start. Yes, there's a good start. But there's still not clarity over Inter Kashi can be promoted or cannot. कुवैत का भी कुछ main players injured हुए हैं. चेक करना पड़ेगा भाई. ला लीगा के refs अच्छे हैं. They don't give unnecessary fouls. Start to keep the play on. Don't stop unnecessary fouls and all. Promote one team directly. Teams from second to fourth playoff winners get promoted. It's not about promoting a two teams. It's also about are the two teams ready? Are the two footballing centers ready? जहाँ से भी आते हैं. तो वो चीज़ें हैं. And I think VAR क्यों चाहिए? ब्रॉडकास्ट से रिव्यू नहीं हो सकते क्या? नहीं, ये ऐसा नहीं है. क्रिकेट जैसे क्रिकेट में अगर स्निकोमीटर ना हो और और क्या होता है एक हॉकाई ना हो तो वो थर्ड एम्पायर डिसीजन नहीं दे सकता आपको विद कैमरा रिप्लेस. Similarly in football also there's a tech which FIFA wants to be there for the VAR to be officially approved from FIFA side. So there's a VAR version, there's a VAR light version. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कैमरा से रिप्ले दिखा दो. उनको enough tech चाहिए to implement that VAR. तो वो चीज़ है. Why Khalid parted with Chetwan going to another club? I have to check on Khalid. So that's any update on PI? Curious. Harry recently said that government is working on the Harry. Who's Harry? Harry Maguire? Esrat? Working on PI behind the closed doors. Esrat? Who is Harry? Harry Maguire? दोनों वर्ल्ड कप क्वालिफाई मैच की मेन स्क्वाड एक साथ अनाउंस करनी पड़ती है या सेकंड मैच के लिए दूसरी अनाउंस कर सकते हैं. कुछ चांसेस जस्ट क्यूरियस टू फुटबॉल रूल्स. I think the same tournament qualifiers you have to announce in together, but I have to check again. I am also curious. But I think we'll of course bring a injury replacement if before the second game if injury happened. Curious Harry की बात कर रहा है. Who's a Curious Harry? पता नहीं भाई. India the have tech. Why can't implement our own version of VR at low cost? TCS तो महंगी हो जाएगी. मतलब किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा और क्या है. Should national team let Sahel play freely as Mohan Bagan is letting him? Should his miss passes be covered by defender? Sahel do press foul when he miss passes. This is I am Vijayan. I'm hoping that we are from Kerala. Creative players should be given a freedom at any level, and I think if Sahel can allowed to have a two miss passes, but if he can next pass can be a goal and assist, why not? I'm not looking his passing percentage and everything. He's not there for that. Your defensive midfielder like Apuia, Thapa, Suresh, they have to have a good passing percentage. Sahel, it's just that don't lose the ball in a dangerous position. Sometimes he have to mature of this decision making also, that where he can lose the match or not. ठीक है. मैं क्यूरियस हैरी का मुझे पता नहीं कौन है. कंटेंट फुटबॉल क्रिएटर होंगे तो अच्छी बात है, बट मुझे नहीं लगता अगर इंडियन फुटबॉल इंडियन गवर्नमेंट बिहाइंड द सीन काम कर रही होगी तो क्यूरियस हैरी, आशीष नेगी और किसी को ये आइडिया होगा. ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि कोई बिहाइंड द सीन कुछ काम नहीं है. कोई कुछ डॉक्यूमेंट्स फ्लोट नहीं किए गए हैं सही ने. कोई डॉक्यूमेंट स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने फ्लोट नहीं किए. कोई थॉट, कोई एक्सचेंज कुछ नहीं है. ओनली लास्ट एक इन्फॉर्मेशन जो आई थी, एफएम ने कमेटी बनाई है टू मेक अ लिस्ट ऑफ प्लेयर्स ऑफ द प्लेयर ओरिजिन्स, राइट. उसके अलावा जो ये चेंज आप कह रहे हो जो ये करना है पीआईएस के ऊपर, ये रातों रात एएफएफ करेगा. इंडियन गवर्नमेंट विल नॉट नेवर डू इट फॉर फुटबॉल. ये मैं आपको और बता दूं. ये पॉलिटिकल रीजन भी है. दे आर नॉट गोइंग टू अलाउ फॉर फुटबॉल. Maybe for a sports they will allow, but that have to be pushed by multiple sports federation and the sports ministry and the SAI also, which they are not pushing. And this is very and ये मैं क्योंकि मैं ये चीज़ इस टॉपिक को 2012 से फॉलो कर रहा हूँ. हरमीत सिंह मेरा फेवरेट होता था. मैं उसे व्हाट्सएप मैसेज करता था उस टाइम पे.
पाजी इंडिया आ जाओ, पाजी इंडिया आ जाओ। तो नितिन संसरा, ये सारे प्लेयर्स मैं देखता आ रहा हूँ उस टाइम से। तो ये रातों रात कोई चेंज नहीं होने वाला। एंड मैं ये बोलूँगा कि एज अ कंटेंट क्रिएटर्स जो भी हैं, इसको मिल्क मत करो, मतलब डोंट यूज़ इट इन अ वे टू जनरेट व्यूज़, फेक व्यूज़, और वो मैं बोलूँगा, बिकॉज Indian government at this stage is not working anything on starting a dual citizenship in India. It's not about pure players. It's about Indian government changing the our constitution in a way to have a dual passports. इसका चांस ही नहीं, the only option is the multiple sports federation getting together and asking Indian government to do it, and that's also very unlikely they will do it. So ये आपको बता दूं। आर्यन कह रहे हैं इंटर काशी ड्रॉज विद टॉप आई लीग टीम्स इन देयर फर्स्ट करियर मैच एंड दे साइन मोस्टली 2023 में। आप इंटर काशी का कैसा फ्यूचर देखते हो? मैं इंटर काशी फ्यूचर अच्छा देखता हूँ और क्लब सस्टेन कर पाए लॉन्ग टर्म में अपने आप को इन उत्तर प्रदेश, ये भी चीज़ है, ठीक है। एंड उत्तर प्रदेश से क्लब डेफिनेटली चाहिए इंडिया को। एंड इंटर काशी कैन दे ब्रिंग मल्टीपल उत्तर प्रदेश क्लब इन नेक्स्ट 10 years. So I think it's not a bad start for them. They have a cult, some very small numbers, but good fan following digitally. Let's see when they start playing in Uttar Pradesh how much fans they can attract in the stadium also. Eric, यार भाई एरिक टनैक कहाँ से बीच में आ गया? जमशेदपुर FC मोहन बगान fight is a classic example of management don't understand away and home stand. It's not management also, it's also the fans also. Fans have to understand the home and away stand also. Dual passport होगा तो पाकिस्तानी में इंडियन बन सकते हैं, शायद यही मसला होगा। यस, ये क्या है, प्लस दूसरी चीज़ क्या है, हमारी 1.3 बिलियन लोगों की पॉपुलेशन है, ज़्यादा ही होगी, ये तो सभी हैं जो काउंटेड हैं, जिनके पास पेपर हैं, जो पेपर पे इससे ज़्यादा लोग रह रहे हैं। सो ये पहले मैं एक बार स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से मेरे कुछ साल पहले जब मैं खेलो इंडिया में कुछ कर रहा था तो मेरी बात हुई थी, तो उनका मानना है गवर्नमेंट स्टैंड पॉइंट इज़ वेरी सिंपल. It's not about giving passport to play for India and Indian football. It's also about other people taking the Indian passports. Say I will give you an example. And this is a bit political, so don't take me wrong. And bit यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसा example दूंगा मतलब जो नहीं होगा. So let's take a family moved to US. Okay, 10 years ago, kid is born and brought up in US. ठीक है. Just give an example, and he has a good background in terms of his family earning, and he has a reservation also in India, and the family take a dual passport. The kid has the dual passport now. Okay, in India the reservation is there, and if you talk about there's a reservation for IITs or the colleges, and reservation is right or wrong, that's a different discussion altogether. And that kid, the US kid, takes away a seat or a government job from a kid who is not coming from a good financial background, but could have taken that seat, and government theory is we have a limited resources and we have a huge population, and we want to make sure that limited resources is used by the people who don't have those resources, not from outside who have those resources, but they still might claim those resources. So ये एक major government की ये theory है, and 1.45 million हो गए, तो तो वो चीज़ है I think इसका एक सिंपल सा ये मैंने मतलब it's a political and इसमें रिजर्वेशन भी है, बट ये आप कॉलेजेस की बात कर लो, एंड एक मैं एग्जांपल फुटबॉल टर्म्स में आपको दे देता हूँ, ठीक है। एंड दिसंबर में लाग हो रही है आनंदन जी, मुझे पता है वो नवंबर में अनाउंसमेंट कर देंगे तो दिसंबर में स्टार्ट होगी। एक फुटबॉल टर्म्स में इसकी बात देता हूँ, अंडर 17 वर्ल्ड कप 2017, ओके। Our AFF at that time to create headlines, they spent taxpayer money, okay, and those people are out of the AFF now, but it's a scam. एक स्कैम है, इसमें मूवी बन सकती है, जैसे स्कैम 92 है ना, एक स्कैम सोनी लिव इस पे भी बना सकता है। AFF at that time was have under 17 World Cup. The talent was scouted through all over the India. The teams are good. We are preparing for it. 1 year or 1.5 years ago, AFF said, "Oh, we want to give all the Indians a chance worldwide to be part of the Indian team." They asked funds from SAI and Indian government. They organized these scouting camps in outside India, Dubai, US, Canada, and everywhere. So. And eventually, to justify those camps, they took two Indian origin players, Namit Deshpande and Sunny Delwal, over the deserving Indian players. And
मान के भी चलो आप कि वो दोनों प्लेयर बेटर थे इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी बाय ओवर नवाज एंड सॉरी गिल एंड नवाज जो भी गोलकीपर था एंड एक और डिफेंडर जो बाहर होता है, बट दे हैड अ बेटर एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल एजुकेशन देयर। वो आए, उन्होंने अंडर 17 वर्ल्ड कप का एक बर्थ लिया, एक स्पेस ली, दो प्लेयर्स की, दो इंडियन प्लेयर्स की, जिनका करियर में भी बेटर हो सकता था अगर वर्ल्ड कप में रहते, खेलते, जो भी कुछ है। आए, अपना वो फ्रूट खाया अंडर 17 वर्ल्ड कप का, चले गए, पासपोर्ट चेंज कर लिया, अब अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं। तो इंडिया को क्या मिला? जीरो। ऑल द मनी वी स्पेंड फॉर द स्काउटिंग, जीरो। ऑल द मनी वी स्पेंड देयर ऑन ट्रेनिंग, जीरो। द टू प्लेयर्स हु डिजर्व दैट सपोर्ट एंड मनी डिडंट गेट एनीथिंग। सो ये भी एक रीजन आप समझो। तो गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू वो है, तो वो भी गलत पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। तो ये सिर्फ फुटबॉलिंग डिसीजन नहीं है, वेरी ऑनेस्टली। ये एक थोड़ा आपका कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, थोड़ा पॉलिटिकली रिलेटेड है। तो इसका सोल्यूशन इन अ वे निकालना चाहिए कि उसको मिसयूज ना कर पाए कोई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ है। दिसंबर में यूथ लीग स्टार्ट हो रही है, वो अकेडमीज को बता दिया गया, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस। भाई जब प्लेयर्स पॉसिबल ही नहीं थे तो एफएफ कमेटी का लिस्ट क्यों बना रहे? लिस्ट मेरे से ले लेते यार, मेरे पास लिस्ट है, उसके लिए कमेटी बनाने की जरूरत नहीं थी। बट पॉसिबल नहीं थी तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी ना, या फिर डिसाइड कर सकती थी। आई थिंक वन ऑफ द गोलकीपर अंडर 17 हु प्लेड फॉर टोरंटो एफसी यूथ टीम, या सनी डेलवाल वाज द गोलकीपर एंड नमित देशपांडे was the defender. And I think Namit is not even playing football anymore, by the way. So that's also the ultimate outcome of that अंडर 17 वर्ल्ड कप, सो वो चीज़ भी है। गोकुलम केरला अगर आईएसएल में प्रमोट होती है तो व्हाट वुड बी देयर नेम? आई थिंक गोकुलम केरला ओनली, गोकुलम केरला एफसी। व्हाट्स रॉन्ग विद मुंबई सिटी एफसी दिस सीजन? फॉरेन प्लेयर्स, looks like that's wrong. He is a coach right now. Who is the coach? Asrat. All players only come, only money and and वो resources जो गवर्नमेंट ने वो रिसोर्स बनाई एक इंडियन प्लेयर के लिए, वो रिसोर्स गिल को मिल सकती थी और नवाज को मिल सकती थी, ये वो रिसोर्स एक एक्स्ट्रा डिफेंडर को मिल सकती थी। वो रिसोर्स यूएस के और कनाडा के बंदे ले गए, वो चले गए वापस देश, वापस रुके भी तो नहीं, रुके खेलते इंडिया के लिए फुटबॉल। आज इंडियन सीनियर टीम में खेलते तो मानते बात, अच्छा इन्वेस्टमेंट करी थी, आज बेटर हो गया। Also many players NRI in Middle East who study in CBSE schools come for the national centers in India just so that it will be stand as a good point in college application for US college. Yes, एक वो भी है। एंड वो कॉलेज एक और उनमें से आई थिंक उसमें से एक प्लेयर ने तो कॉलेज में ही एडमिशन ले लिया अंडर 17 वर्ल्ड कप के सर्टिफिकेट के बेस में। अर्नव भट्टाचार्य said that PIA is not about dual citizen, FIFA will apply OSI कार्ड। ये तो मैंने बहुत पहले बता दिया था आपको ऐसा रात। फीफा की नज़र में OSI कार्ड्स आर द लीगल आइडेंटिटी प्रूफ, तो यू डोंट नीड अ passport to be representing your country. You need an identity proof which is approved by government. It can be Aadhaar card, by the way, if governments want so. So, but here is the point: the OSI cards are held by every Indian. So, if a government make a mandate for our OSI card holders to play for India, then there will be demands from other industries. Every other thing that OSI card holders should be given XYZ voting rights, for example, these kind of stuff. So that's why it's a complicated decision, but they have to find out a decision accordingly which does not hammer the progress of the country and it is not hammered in negatively as a country. Why no one taught Sahel and Changte were playing in foreign, gave up their life there and studied and played in Indian local league and reached in ISL? Why no PISL player do this? Two things: Sahel and Changte both were the Indian passport holder and they're outside. There are many kids in Northeast, in Middle East who are Indian passport holder. Changte never went outside. He was part of DSK Sivajin, went for 6 months to train in Liverpool. So, he never were there. So, factually, that's wrong. Sahel was in Middle East, came to, play Santosh Trophy Nationals in for Kerala, and then eventually his journey started. So, they were not, and technically, non-Indian passport holder. They are the Indian passport holder from very first day. प्रोवाइड का स्कोर आ गया था वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए, यस आ गया है, अभी वेट कर रहे हैं लिस्ट का, आज रिसीव नहीं हुई मेरे पास अभी तक। आर यू गोइंग टू वॉच मुंबई सिटीज अल हिलाल इन स्टेडियम? सॉरी, नहीं देख पा रहा हूँ, अभी ट्रैवलिंग का शेड्यूल सारा टाइट चल रहा है। मेहताब को निकालो टीम से, वो तो कोच डिसाइड करेंगे। नमित देशपांडे इज अ कोच राइट नाउ। अच्छा जी, सही है। अब कोच कहाँ कर रहे हैं? यूएस में कर रहे होंगे वो, क्योंकि पैसा तो इंडियन गवर्नमेंट ने लगाया, यूएस में करेंगे। तो माई स्टार्टिंग 11: गुरप्रीत, संदेश, लालन चुंगा, आकाश मिश्रा, रोशन सिंह राइट बैक में सिंह, सैल, थापा, अपुया, चांगटे, महेश, सुनील। सही है, सही लग रही है आपकी स्टार्टिंग 11। आई थिंक थोड़ा सा आप डिफेंडर में चेंज कर सकते हैं, तो वो चीज़ अलग है।
बिहार has recently won AFF Sub Juniors 2023. Do you think something is fishy? भाई जब मैच देखे नहीं है तो कुछ कह नहीं सकता, देखो क्या कह सकता है क्या नहीं है, तो देखते हैं। नमित हो गया, आर यू गोइंग टू, ले लिया मैंने। सचिन सुरेश परफॉर्मेंस रियली इंप्रेसिव, आई थिंक अनदर गुड गोलकीपर, एंड आई थिंक Kerala Blaster decision of selling Gill is maybe proving day by day right, and because they had somebody in their reserves who is instant replacement. It required lots of funds to replace, so I think good. I'm not able to DM you on Twitter. I think ट्विटर का डीएम तो मैंने खोल दिया था, सेटिंग पहले ऑफ थी, अब ट्राई करना मैंने रिसेंटली। हमारे मार्क जुकरबर्ग भाई कुछ भी करते रहते हैं, तो एक्सेसिबिलिटी मैं चेक के डीएम सेटिंग ऑन कर दी थी मैंने। वीआर लाना चाहिए अभी तो। डू यू थिंक इंडियन मार्केट इज ओवरपेड दैट इज स्टॉपिंग इंडियन प्लेयर्स टू गो अब्रॉड एंड टेस्ट देम? इट्स नॉट ओवरपेइंग, पैसा तो बाहर भी बहुत है, बट हाँ आप कह सकते हैं एक रीजन है। वी आर रोशन सिंह ऑलरेडी गॉट थ्री मैच सब्मिशन, नाउ अगेन अ रेड कार्ड। पार्ट एंड पार्सल ऑफ लर्निंग ऑफ एज अ यंगस्टर, आई थिंक हैव टू डील बेटर, जो भी है तो देखते हैं। इज अपुया's टी मैच मैटर सॉल्व? कांट से एनीथिंग अंटिल यू सी द फाइनल स्क्वाड। 23 मैच की स्क्वाड। आईएसएल स्पॉन्सर नहीं मिला भाई। योर थॉट्स ऑन टेनैक कमेंट टैक्टिक बेंचिंग वरान? मैं तो पेशेंस लूज कर चुका हूँ भाई, मुझे तो लगता नहीं है कि देयर विल बी एनीथिंग पॉजिटिव कमिंग फ्रॉम टेनैक फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, ऑनेस्टली। मतलब the way the things are going on, the way his statements, the tactical decision to drop Varane over Johnny Evans and Harry Maguire. Yesterday I was in Udaipur, so मैं होटल में था रात को, कोशिश करी मैच देखने की, मैच देखते देखते सो ही गया। आँख खुली तो 2-0 हो चुका था, दोबारा आँख खुली तो 3-0 हो चुका था। तो अब मतलब मैच देखने के लिए भी मोटिवेशन नहीं बच रहा, तो फिर क्या बोल सकते हैं, सो इवेंचुअली। मैं नया हूँ, आशीष नेगी के सेल्फ इंट्रोडक्शन मिलेगा थोड़ा सा? अच्छा, मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन, वाह कुछ नहीं यार, आपके जैसे फ़ैन हूँ मैं भी, आई एम विजान भाई, सो नथिंग मच। सो इंडियन फुटबॉल करते हुए, देखते हुए, काम करते हुए, आई थिंक अब 13 साल हो गए। आई थिंक 2011 में स्टार्ट हुई थी जर्नी एशिया कप के साथ। सो डिफरेंट रोल्स किए हैं उसके पहले, फ़ैन भी रहा हूँ, पेजेस बनाया हूँ इंडियन फुटबॉल के लिए। इंडियन फुटबॉल टीम का पेज जो है फेसबुक पे बना के दिया था एफएफ को 400 के 500 के लाइव के अराउंड। फिर सिंस देन आई एम रनिंग, खेलना हो, सो छोटा सा इंट्रोडक्शन यही है। अकॉर्डिंग टू द मोस्ट बैलेंस स्टार्टिंग इलेवन, संधू, जिंगन, सना, निखिल, आकाश, थापा, अपुया, सहल, चांगटे, महेश, छेत्री। डिसेंट अगेन, ये आपको होना चाहिए, तो वो चीज़ है। ईशान पंडिता को ईशान नेशनल टीम नहीं बनी है, ऑनेस्टली आपको बता दूं मैं, राइट, जस्ट बिकॉज उनको मैच टाइम डिजर्व। फिर से तार हिल रही है। स्पर्स जीतेगी क्या प्रीमियर लीग अंडर न्यू कोच? पिछले 3 साल से सफर कर रहा हूँ, देखते देखते हाई बर्ड्स लगते हैं, टॉटनम के फैन है। स्पर्स जीत सकती है अगर वो जनवरी में लॉजिकली और स्पेंड करें, तो एटलीस्ट 100 मिलियन का स्पेंड इनको जनवरी में करना चाहिए। केन का जो पैसा मिला है उसको खर्च करें, उसको अपनी जेब में ना डाल लें। लेवी भाई, डैनियल लेवी सर, उसको खर्च करें, टीम को इम्प्रूव करें, डेफिनेटली जीत सकते हैं। बट सारा होता है, अल्टीमेट चीज़ मैंने देखी है फुटबॉल में, इट्स नॉट प्रीमियर लीग। आपके प्लेयर्स के पास विनिंग मेंटेलिटी है और विनिंग एक्सपीरियंस है कि नहीं, तो उनको तो विनर्स चाहिए उस टीम में जिन्होंने लीग जीती हो पास्ट में, उनको पता हो कि लीग कैसी जीती जाती है। आप सिटी को देखो ना, दे स्टार्ट वेरी स्लो, स्टेडिली जीतते हैं, ड्रॉ करते हैं, हारते हैं स्टार्टिंग मैच। नवंबर दिसंबर ऑनवर्ड्स उनकी गाड़ी जाती है 5th गियर में, रुकती सही मई में ही है, फिर जब टाइटल सील हो जाता है, तो वो चीज़ उनको पता है। आर्सेनल विल विन इट से असरात भाई 7 मोहन बगान 6 मुंबई के प्लेयर हैं स्क्वाड में। अरे यार फिर ये सस्पेंशन की जिसका लिस्ट डाल दो भैया, ये लोग हर किसी को वो चाहिए, आजकल एंगेजमेंट की कहानी है। भाई इंडियन हॉकी टीम के बारे में बताओ। गणेश भाई मैच देखे नहीं मैंने, ऑनेस्टली बता दूं, पर अच्छा खेल रही है चैंपियंस ट्रॉफी में। जो भी मैं टीम से बात कर रहा था, मेरे जो हॉकी कवर करते हैं खेलना पे, तो देखते हैं। भाई जय गुप्ता आ सकता है इंडिया में? यार बहुत अर्ली है, बट आ तो सकता ही है। लेफ्ट फुटेड डिफेंडर है, आप लेफ्ट सेंटर बैक ला सकते हो, फिजिक है लड़के के पास, लेफ्ट बैक भी खेल सकता है, तो सुभाषिष बोस का रोल वो प्ले कर सकता है स्क्वाड के अंदर, पर एक्सपीरियंस नहीं है। नोटिस किया सडनली आईएसएल इंटेंस होते जा रहे हैं, लास्ट ईयर इज इंटरेस्टिंग नहीं था, होगा इंटेंस बिकॉज आपको बता दूं कि अब चीज़ें सीरियस होती जा रही हैं आईएसएल लेवल पे। एक चीज़ है, इवनिंग मैचेस हैं, लेट इवनिंग मैचेस हैं, 7 बजे मैच चालू हो रहे हैं, अच्छा वेदर होता जा रहा है धीरे धीरे मेजॉरिटी ऑफ द इंडिया में, गर्मी ह्यूमिडिटी कम होती जा रही है, तो ये इंटेंसिफाई होते जाएंगे। ऑल्सो इंटेंसिटी और बढ़ानी पड़ेगी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू कोचेस को भी।
Punjab performance is not good in ISL. They are struggling, Punjab, and that shows that you can't promote as many team you want just like that. The difference is there between ISL and I League. अरे वो स्टी मैच के फेवरेट पेज पे ने डाला था, ठीक है, हाँ तो यही है, ग्लैमर करने दो उनको। गोकुलम ने जिस हिसाब से पहला मैच खेला है, भूल जाना प्रमोशन भाई, उनको मैं कॉम्पिटिटर फॉर प्रमोशन निधि थे, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया अपोनेंट को। देखते हैं, देखो लास्ट ईयर भी ऐसी लग रहा था ये जाएंगे स्टार्टिंग, और वो गए नहीं। तो सोचिए क्या स्टीमैक के कॉन्ट्रैक्ट में बीच में कैंसिल कर सकती है स्टीमैक को 2070 तक सरकार पे नौकरी लग गई है भाई। भाई सैकिंग कहते हैं उसको, सैक होते हैं कोचेस तो हो सकते हैं। जय गोतो स्ट्रगलिंग इन 6th tier ऑफ ला लीगा, now he's slaying in ISL. It's good. Spanish टायर्स अच्छे हैं फुटबॉल के, तो आप बोल सकते हैं स्पर्स विल बॉटल द लीग ड्यू टू द इनएक्सपीरियंस। That's what I'm saying. They need a players in January who has that experience of winning tournaments, winning trophies in the leagues, and spend. They need a striker. Get Ivan Toney for sure, but still get some experienced player to get that group of player together. They can win it. They can win it. But City के साथ मैच करना पड़ेगा। Apart from big teams, do you think people lost international because of poor referees and the bad decision making? Also, referees giving advantage to some of the teams. I don't think so. Referees की वजह से advantage ऐसा कुछ होगा कि people will leave for ISL, not maintain the way it should be. जो clubs नहीं कर पा रहे हैं वही major problem है। तो should India include Kotal and Bose instead of Akash and Nikhil for more defensive stability? No, please, no. नहीं करना चाहिए, ऐसे मत सजेस्ट करो मिस्टर एसरात। Manchester is a disaster for 10 years in making, thanks to Glazers and the overpaid players who blame the managers for their performance. Sack them out without getting any blame. So, देखो ideally in terms of football language, you can't sack 11 players, and Siraj is doing similar repeat of what Asia Cup he did. विकेट पे विकेट निकाल रहा है, वैसे तो कुछ किया नहीं था, पर श्रीलंका की पैडी टीम बना दिया सिराज ने अपनी। या एंड सू वाला सेलिब्रेशन भी सिराज ने आज फिर से कर दिया, तो अब रोनाल्डो के फैन बॉयज़ इसको प्रमोट करेंगे। तो या कमिंग बैक टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, सो ऐसा नहीं है आप 11 प्लेयर सैक कर सकते हो, सेल कर सकते हो। अल्टीमेट थिंग इज अ मैनेजर ड्यूटी टू कंट्रोल Ronaldo. Manchester United fans supported Eric Ten Hag and said don't want Sancho. अब ठीक होगा I think. As a Manchester United fans, we playing FC Copenhagen in a Champions League game, and a Denmark club coming to Old Trafford and they playing one touch passing tiki-taka football, and Manchester United playing long ball. Players can down tools, they don't perform, but the playing identity which Eric Ten Hag was supposed to install at the club, nowhere to be seen. It's the second season. He has signed 7 to 8 players. He can make his own playing 11 now by signing 3 more players. So where there's something wrong. Of course, players are down tooled. Players are wrong. Those players should be left. But I think as a manager, you have to take a responsibility. Where is the playing style which which he's promised? So I think that's what my thought process is. I'm a big Manchester United fans, but I think coach have to take a responsibility after signing 7-8 players. What he's doing now is not up to mark. So that's my. या सॉरी ब्लैक स्क्रीन वही फिक्स करते हैं। या सॉरी, सो दैट्स, चले नहीं गए हैं, आगे भाई, आगे लाइट गई, लाइट नहीं गई यार, अभी स्टूडियो में कुछ चल रहा है आजकल, कुछ चीज़ें ख़राब हो रही हैं। सो जादू टोना कर दिया, सही बोल रहे हो,
Bost and Kotal, they are favorite of Constantine. So that's why they were part of this team, but now it is a different addition. तो मैं वही कह रहा था कि यार कोच को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी एंड आई लाइक्ड व्हाट आई वांटेड एरिक टेन हैग टू कम ओवर Pochettino in that period. I thought he was doing good with the Ajax, but not impressed as a fan. Not impressed. Your thoughts on Rashford performance? इसको जल्दी से बात करके एंड कर देते हैं ना तो ये चलता रहेगा. I think expectation simple है. Rashford should be dropped. The coach is not showing enough to drop him. He's not performing. Should be out of the team. If he's performing, should be in the team. That's the thing. So Arteta much better than Ten Hag, but Arteta finished eighth twice in a row. So you can't say he's better than him. Let's see. He's doing good now. Spurs को रिचार्लिसन को सेल करके अच्छा स्ट्राइकर चाहिए. रिचार्लिसन को रखो पर इवान टोनी ले लेना चाहिए उनको. मेरा ये थॉट प्रोसेस है. वो सब छोड़ो, ये बताओ कि आईएक्स रेलीगेशन सर्वाइव कर सकता है? मुश्किल लग रहा है भाई इंडिया श्रीलंका मैच का क्या चल रहा है? 3-4 विकेट श्रीलंका बेचारे, पता नहीं क्यों ही क्या ही लगता होगा क्या हो रहा है उनके साथ जिंदगी में. एशिया कप में भी यही हुआ और यहाँ पे भी यही हुआ. भाई रोनाल्डो कमेंट्स कर रहा है ऑन अ जर्नलिस्ट सेइंग इट्स अ रिग्ड एंड मेसी डिडंट डिजर्व इट. ठीक है यार, रोनाल्डो इज अ बैड लूजर, सो कुछ दिक्कत नहीं है. ब्लैक फ्राइडे टुमारो तो आज से हो रहा है. भाई भारी मिस्टेक हो गया. हम मैन सिटी को हर सीजन तो हराते थे. दैट्स एक हाइब्रिड. बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने. मैनचेस्टर यूनाइटेड बुरे दिनों में भी हमने सिटी को हराया है. एंड वो एक बात मैं बोलना चाहूँगा आपको कि ओले के अंदर मैं ओल्ड ट्रैफर्ड में था. मैनचेस्टर डार्बी, मार्शल और मैकटोमिनी का गोल. सो दैट्स अ थिंग. राइट नाउ तो अभी वो सैकिंग के चार्ट पे हैं. इट्स जस्ट अबाउट ये मैच, अगला मैच कौन सा मैच कब होगा, कैसे होगा, वो देखना है. क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यार आप हारो ना, फुटबॉल खेल के हारो. मेरा सिर्फ इतना मोटिव, हारने से डर नहीं लगता, बट जैसे फुटबॉल खेल से डर लगता है कि मतलब फुटबॉल फैंस वर्ल्ड वाइड क्यों देख रहे हैं, मतलब फुटबॉल किसी क्लब को देख रहे हैं. स्ट्रेस बस्टर है उनके लिए यार. लाइफ में मुश्किल है, सब कुछ चल रहा है. फुटबॉल देखते कि अब रिलैक्स करेंगे, अपनी फेवरेट टीम को देखेंगे. हमारी फेवरेट टीम के लिए हराम फुटबॉल, लॉन्ग बॉल, इतना पैसा खर्च करने के बाद. अगेन ना डेनमार्क क्लब बाय द वे, वो आके टिकी टाका 1 टच पासेस एट ओल्ड ट्रैफर्ड इन चैंपियंस लीग एंड वी आर प्लेइंग लॉन्ग बॉल. सो आई थिंक वो चीज़ है. तो लेट्स सी. अब हर साल क्या न्यू बैलन डोर विनर देखने को मिलेगा? आई थिंक हालैंड और एम्बापे के बीच में ही रहेगा. बट यार बैलन डोर की थोड़ी ओवररेटेड है बाय द वे. सो उसको ज़्यादा वैल्यू देनी नहीं चाहिए. बैलन डोर इज सिलेक्टेड फ्रेंच जर्नलिस्ट. मेन अवार्ड इज फीफा मेंस प्लेयर बेस्ट प्लेयर अवार्ड. पहले मर्ज होता था, बैलन डोर ये दोनों मर्ज थे साथ में. इनकी स्पॉन्सर पार्टनरशिप थी, अब वो खत्म हो गई है. वो अवार्ड में क्या होता है, सारे नेशनल टीम के कोच, प्लेयर्स एंड एक जर्नलिस्ट फ्रॉम एवरी कंट्री वोट्स. उसका मुझे थोड़ा बेटर लगता है सिस्टम. ठीक है, एटलीस्ट बिकॉज ओले हैड अ प्ले स्टाइल बट एरिक 10 days डोंट. एरिक 10 days 10 days या एटलीस्ट ओले's टीम कैन डू काउंटर्स. यहाँ तो काउंटर अटैकिंग फुटबॉल ही जीरो कर दिया है इन्होंने, तो ठीक है. रहीम ले स्टार्टेड वेल दिस सीजन इवन दो ही हैजंट स्कोर्ड येट. फाइनली इज प्लेइंग एज स्ट्राइकर. दैट्स मैटर्ड एंड आई थिंक एज आई सेड ही कैन लर्न दिस विद लेस प्रेशर विद क्लब लेवल. जहाँ कम प्रेशर है वहाँ वो लर्न कर सकते हैं इन इंटरनेशनल फुटबॉल. तो ठीक है जी. Your thoughts on Xavi Alonso as a manager? Have you followed him in the Bundesliga? Do you think he's really perfect for Real Madrid? It looks like the destiny for destined to be Real Madrid manager. What he's doing in Bundesliga is fantastic, and we work with Bundesliga closely. And I was talking to a few people in Bundesliga. They said great for the league, and what he's done with the Bayern Leverkusen is great. So I think let's see. Great again, another modern midfielder who turned into a good manager. Not doubt midfielders in general to be a good managers, defenders, strikers का रहता है यार, वो मैनेजर्स बन नहीं पाते अच्छे. मैनचेस्टर कोच नहीं मिल रहे हैं आफ्टर सेलेक्शन. मैनेजमेंट थिंकिंग इज वर्स. उदय जी मैं एक और बोलूँगा कि कोच से भी नहीं होगा, हायरार्की भी नहीं है. डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल, हेड ऑफ स्काउटिंग, स्काउट्स, मेडिकल डिपार्टमेंट, एनालिस्ट डिपार्टमेंट, दैट्स नॉट देयर, नॉट अप टू मार्क फॉर अ क्लब लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड. तो लिस्ट ऑफ प्रोबेल्स नहीं आई है क्या? 28 की आई है, अभी फाइनल आनी बाकी है. पिछली बार ब्राउन्स को रोनाल्डो रिप्रेजेंट कर रहा था, इस बार कोई नहीं दिख रहा है. मनवीर को नेशनल टीम में राइट विंग बैक पर खेलना चाहिए. हम राइट विंग में खिलाते नहीं है, ये बात है. मेसी शुड फील सम सेम फॉर एक्सपेक्टिंग टू अंडरस्टैंडिंग बैलन डोर्स. चलो अब रोनाल्डो मेसी फैन आ गए हैं, चैट पे लड़ने दो उनको, हम कुछ नहीं बोलेंगे भाई. CR7 रोनाल्डिनो को कॉपी करता है, बट मेसी कंप्लीट फुटबॉलर है. मेसी IQ, ड्रिबलिंग, विजन, प्लेमेकर, मैजिकल टच,
चीकी प्लेस बट रोनाल्डो बाइसाइकिल किक, हाई जंप, बॉडी बिल्डर, फ्रैंकी चाचा। यार दोनों अच्छे हैं, आप क्या दिक्कत है, कंपेयर करने की जरूरत क्यों है? मतलब मैं और आपकी ओपिनियन, आपको मेसी अच्छा लगता है, किसको रोनाल्डो अच्छा लगेगा, मुझे रूनी अच्छा लगता था, तो मेरी ओपिनियन है, मेरी ओपिनियन गलत नहीं है, क्योंकि मेरी ओपिनियन है, आपको भले गलत लगे, मेरी ओपिनियन, मुझे रूनी अच्छा लगता था, मुझे एज अ फुटबॉलर जब रूनी अपने पीक पे था, मुझे रूनी बेटर प्लेयर लगता था दोनों से, ठीक है। जिसको रोनाल्डो तक करने दो, सेलिब्रेट करो दोनों प्लेयर को। वी आर लकी दैट वी वाचिंग अ एरा ऑफ टू generational talents, who replicated Pele or Maradona in terms of hype, in terms of the rivalry. So I think Ronaldo is Ronaldo. What Ronaldo has done in his career, Messi couldn't. What Messi has done in his career, Ronaldo could not. तो दोनों की अचीवमेंट अपनी अपनी है। रोनाल्डो का चैंपियंस लीग रिकॉर्ड, रोनाल्डो की प्रीमियर लीग सक्सेस, Ronaldo came very early from Portugal to Manchester United, big club, changing multiple leagues, multiple clubs have played for, done well for all the clubs. सबका अपना अपना फंडा है यार, ऐसे फिर अब बोलेंगे कि रोनाल्डो फैंस बोल सकते हैं मेसी ने क्या किया, फ्रेंच लीग में जाके कुछ भी नहीं किया, अब तो सिर्फ बार्सिलोना के लिए सक्सेस मिली है, इंटर मियामी में तो वैसे भी कुछ चल नहीं रहा था उनका भी, अब देखते हैं नेक्स्ट सीजन क्या होता है। तो आप मेरे हिसाब से इंजॉय करना चाहिए जो भी है, मेरे लिए अगर मैं जब एज अ पर्सनल ओपिनियन, मैं तो रूनी को बड़ा मानता हूँ, बिकॉज एज अ फैन मुझे जो रूनी में फुटबॉलर में दिखा, मुझे नहीं दिखता रोनाल्डो और मेसी में। फाइट जो है रूनी के अंदर, वो फाइट नहीं थी रोनाल्डो और मेसी के अंदर, जब दोनों तीनों बंदे अपने पीक पे, आप पीक टाइम कंपेयर करो, आप अभी मत कंपेयर करो अभी कौन कहाँ है। तो जो है आप इंजॉय करो, जिसको देखना है, आपको हैरी मैग्वायर अच्छा लगता है, आपको लग सकता है आपका फेवरेट फुटबॉलर हो सकता है, क्या दिक्कत है, उसमें वो सबकी अपनी अपनी कहानी है। तो देखते हैं, स्पर्स भी हर सीजन में हराते हैं सिटी को, यस बताइए। रोनाल्डो इज अ कंप्लीट गोल स्कोरर, हेडिंग, राइट फुट, लेफ्ट फुट, लॉन्ग रेंज ऑफ फ्री किक, इज अ कंप्लीट फुटबॉलर, ग्रेटेस्ट गोल स्कोरर ऑफ वर्ल्ड फुटबॉल टाइम अलोंगसाइड मेसी। सिंपल बात, दोनों बड़े हैं यार, क्या दिक्कत है, एंजॉय देम व्हाट यू वांट टू गिव। यूनाइटेड ओजीसी फेवरेट इज रूनी है, वाज अ डिफरेंट एनिमल, द वर्क रेट ऑफ वेन रूनी, अगर रोनाल्डो और मेसी ने उस वर्क रेट से 5 साल ही फुटबॉल खेली होती ना, उनका करियर इतना लंबा ही नहीं होता। पीपल से ना, मेसी तो रूनी 30th में 31-32 साल में भी बुरी हालत हो गई थी भाई, वो लड़का 16 साल की एज से उसने जो वर्क रेट दिखाया है, what to the next level, and I remember a season when he scored around 30-40 goals for Manchester United, and he went to Sir Alex Ferguson, coach, I don't want to play striker, I want to be number 10. Can you imagine, Ronaldo and Messi saying, I don't want to score goals, I'm not enjoying my football because I'm scoring goals. Because Rooney was a complete footballer in terms of to get involved in a game. Midfielder, on a wings, he played on a wings to accommodate Ronaldo sometime, the number of assists he has, the tackles, the balls he's win. So it's fantastic, I think वो आप अगर रूनी का पीक देखोगे तो it was a different level. Rooney was tearing apart Premier League at 16-17. Ronaldo and Messi was not tearing the leagues at 16 and 17. So different. और मेरी ओपिनियन है, और ये मेरी ओपिनियन है, मैं नहीं कह रहा कि वो मेसी और रोनाल्डो से बड़ा, मेरे लिए मेरा फेवरेट रूनी है ओवर मेसी और रोनाल्डो, बट ये नहीं कह रहा हूँ वो उनसे बड़े फुटबॉलर, दोनों अपने अपने लेवल पे हैं, तो वो चीज़ है। एंड आप रिस्पेक्ट करो सबकी ओपिनियन, ठीक है, लड़ना झगड़ना क्यों है, सही बात है। हमारा घर फॉरेन में तो लोग इंडियंस का मजाक उड़ाते ही हैं, तुम लोग फुटबॉल की बात कर रहे हो तो बेटर हो। सो गाइस लेट्स हम इंडियन फुटबॉल पे फोकस करते हैं, ठीक है। चलो, मेसी रोनाल्डो रिजर्वेशन इज सेटबैक इन इंडिया, अब एक डिफरेंट टॉपिक पे आ गया, छोड़ देते हैं। डू यू थिंक थापा इज ओवररेटेड? नो भाई, नो डेफिनेटली नॉट। डोंट जज थापा ऑन दी रीसेंट परफॉर्मेंस, वो सिंपल सी बात है भाई। मैं आई रिस्पेक्ट ओपिनियन, मैं मेसी को ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, बस अब एंजॉय करता हूँ, देखते रहो भाई। डोंट टेल मी दे गोना अरेंज कोपा अमेरिका अगेन नेक्स्ट ईयर। तब अब तो अभी जीते नहीं क्या कोपा अमेरिका? जीत गया ना अब तो, क्यों अब हर साल 3 साल से अरेंज किया तो था जिताने के लिए, क्या दिक्कत है? ये लड़ क्यों रहे Lamel Yamal playing good in La Liga in 16, and that's why when people say youngsters are not ready for this and this that, I think that's totally false. If you're good enough, you're ready at any age. 15, 16 does not matter. What is going wrong with BFC में मैं टूट गया हूँ as a fan श्रीनिधि यार, अब it's a rebuild, take time. That's only thing I say. Fun fact, there is a Copa 24. Oh, okay. Again, कुवैत और कतार का रीसेंट फॉर्म कैसा है? कतार का थोड़ा डागमडोल है, कुवैत का डिसेंट है रीसेंट फॉर्म, बट दे लॉस्ट अगेंस्ट इंडिया इन दिस हाफ चैंपियनशिप, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है बॉयज। थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन। अब मिलेंगे आपको जल्दी ही, अब तो
वॉच अलॉन्ग भी है अभी कुवैत का, देन कतार का, ठीक है, एंड होपफुली जैसे नेगी जी हु केयर्स अबाउट रोनाल्डो एंड मेसी, वी केयर अबाउट ओन रोहित कुमार एंड रहीम अली. What is Roshan? He's a young player. He has to work on it. The coaching staff at Bangalore have to work on it. That he has to work to his temper. So that's the only thing. कुवैत होम रिकॉर्ड में अच्छा नहीं है अभी. देखो इस लेवल पे होम एंड अवे ज़्यादा है नहीं, बट देखते हैं क्या होगा. हम लोगों को जीतना पड़ेगा अभी, और कुछ नहीं है. रोहित गोट कुमार. One good thing Steam has did as soon as he came, he was bring Amarjeet and Gallo to senior squad. He should do the same with the SAF in the smaller tournament. Yes, I totally understand. But Kuwait defeated Syria comfortably. They are in form. It's a complicated game. हम बात करेंगे कुवैत और सीरिया, कुवैत और कतार गेम की अपकमिंग वीडियो. बट लेट्स सी, होपफुली अभी स्क्वाड देखते हैं पहले, फिर बात करते हैं. होपफुली अपुया इज देयर, दैट्स द ओनली थिंग. 28 मैन स्क्वाड में अपुया है, बट आपको बता दूं अपुया पहले भी प्रोवेल स्क्वाड में रह चुके हैं आफ्टर द कॉन्टिनेंटल कप. फाइनल स्क्वाड में आते हैं कि नहीं आते, दैट्स अ बिग चैलेंज. That we have to see. Thank you very much. We will see you again very soon, and keep supporting Khel Now on the all the links on social media, on the Instagram @Khel Now, Twitter @Khel Now. You can follow me on Twitter, Instagram 7Negi Ashish. Links are in descriptions, and also in next few days you will find Khel Now mobile app on a nearest store, Play Store or Apple Store. Please do download, use it, give us feedback and reviews, and share it with your friend. Thank you for watching.